So today we are going to start with Environment Protection Act. Environment Protection Act 1986 is an act of the Parliament of India. In the wake of the Bhopal tragedy, the Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under the Article 253 of the Constitution, passed in March 1986. It came into force on 19th November 1986. So, Environment Protection Act was passed on 1986 on 19th November 1986, okay, by the Parliament of India, and this act was passed after the Bhopal tragedy. After the Bhopal tragedy, the government prepared this act under the Article 253. Okay, Article number 253. The Government of India has uh, passed an act which deals with the environment protection. The Environment Protection Act was enacted in 1986 with the objective of providing for the protection and improvement of the environment. So जो Environment Protection Act है was enacted when the firm comes into functioning in 1986, and its objective was the protection and the improvement of the environment. Okay. It empowers the central government to establish authorities charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form and tackle specific environmental problems that are peculiar to different parts of the country. The act was last amended in 1991. So amendment start हुआ है 1981 से, but was passed in 1986, 19th November 1986. That's why. और इसका मेन एम था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था to protect and improve the environment. According to this act, it enacted or it empowers the central government to establish authorities charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form and to tackle specific environmental problems that are peculiar to different countries of the different part of the countries. Okay, so we will first move to one by one. We will see to the objective of Environmental Protection Act. So the first objective is to protect and improve air, water, and land environment. Second objective is to prevent hazards to all living creatures and properties. Third is to maintain a pleasant relationship between human being and their environment. So these were the objective, or these are the objective of Environmental Protection Act. Now we will see the important feature of this act. What all are the important features of this act? This act empowers the government to lay down procedures and safeguards for the prevention of accidents that causes pollution and remedial measures if an accident occurs. So, as per this act, ये act government को empower करता है कि वो procedures बनाए and कुछ भी ऐसा जो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए भी एम्पावर करता है. ओके, द गवर्नमेंट हैज सेकंड important features is the government has the authority to close, prohibit or regulate any industry or its operation if the violation of the provision of the act occurs. अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री है या फैक्ट्रीज है या कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अगेंस्ट जाती है, ओके, वायलेट करती है इस एक्ट को, if any of the activities of
any of the industries or operation violates the act, Environmental Protection Act, then the government has the authority to close or to prohibit or regulate industry or any operating system. ओके, तो तब गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस कंपनी को या उस इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को क्लोज कर सकती है, ठीक है, प्रोहिबिट कर सकती है, और क्या कर सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है. So this, so next is any person who fails to comply or contravenes any provision of the act is punishable with imprisonment for a term extending up to 5 years or fine up to 1 lakh or both. अगर कोई ऐसा इंसान है, even an individual also is violating this act, इस एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है और इस एक्ट को वायलेट कर रहा है, तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, और किसी किसी केस में, अगर सीवियर केस है, बेस्ड ऑन द केस एंड बेस्ड ऑन द वायलेशन, extent of violating the act, some person can get both 5 years of imprisonment and 1 lakh as a compensation. They have to pay. Okay, दोनों चीजें भी हो सकती है. In addition, an additional fine 5,000 per day may be imposed for an entire period of the violation of code. अब हो सकता है कि जैसे एक दिन वायलेट किया, दूसरे दिन डेली वायलेट ही कर रहा है, सेम थिंग the person is repeating again and again. तो हो सकता है every day that person has to pay 5,000 rupees जब तक कि वो अपने एक्ट को सुधारे नहीं. ठीक है? ये एक्ट फिक्स करता है liability of the person who is directly in charge unless it is proved that the offense was committed without his or her knowledge or consent. Okay? अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो भी उसके लिए होगा, और अगर उससे कोई ऐसे प्रूफ हो गया कि उसको पता ही नहीं था, उसको मीन्स उसको नॉलेज में नहीं था, उसके नॉलेज के अगेंस्ट में ये किया जा रहा है, then that person can get relief. Otherwise, there is strict action, strict rule against violating the Environmental Protection Act. और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एक्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि अगर कोई भी इस तरह के रूल्स को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट कर रहा है, तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको पनिश करेगी, किसी और अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे, बहुत जल्दी मतलब पनिशमेंट मिल जाएगा. ओके, इस एक्ट के थ्रू एक या एक से ज्यादा एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज भी अभी तक स्टेबल हो चुकी हैं, स्टैब्लिश हो चुकी है. ओके, इट एक्सप्लेन्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड देयर पावर एंड फंक्शन. ये बताता है कि ऑफिसर का क्या, क्यों अपॉइंटमेंट हुआ, मतलब एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन का, स्टाफ का क्या पावर है, और उसका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ है, ये सब चीजें के बारे में बताता है. ये रूल्स को सेट करता है फॉर प्रोटेक्टिंग environmental pollution. So these are some of the important features of this act. Now we will move to Air Act 1981 of India. Okay, Air Act 1981 of India, prevention and control of pollution, air pollution के लिए एक्ट पास हुआ, which is termed as Air Act 1981 of India. The government passes this act in 1981 to clean up our air by controlling pollution. States that sources of air pollution such as industry, vehicles, power plant, etc. are not permitted to release
particulate matter, lead, like carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds, or other toxic substances beyond a prescribed level. तो गवर्नमेंट ने एयर एक्ट का पास की थी 1981 में, ताकि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। इस एक्ट के ये एक्ट बताता है कि एज पर दिस एक्ट जो जो सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्री है, व्हीकल्स है, पावर प्लांट्स है, ये हम लोगों को परमिशन नहीं है कि ये कुछ गैसेस रिलीज करे, जैसे कि लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एसिड रेन कर देते हैं, है ना। कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इन सब का एक एक लेवल है। इससे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, अगर इससे ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, उस लेवल से ज्यादा, तो फिर उनके अगेंस्ट में एक्शन होगा। ओके, बेस्ड ऑन दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, एयर पोल्यूशन एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट भी क्या होगा, देयर विल बी एक्शन। To ensure this, Population Control Board has been set up by the government to measure pollution level in the atmosphere and at certain sources by testing the air. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे पोल्यूशन को और इन सबको चेक करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, सॉरी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेट की, जो कि ये एयर पोल्यूशन का लेवल चेक करेगी। ठीक है, और ये चेक करती है पार्ट पर मिलियन और इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। इसके बेसिस में ये चेक करती है। तो कौन सा बोर्ड सेट किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, दैट इज PCBS। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट्स आर एज फॉलो। एयर एक्ट 1981 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, to provide the prevention, control and reduction of air pollution, एयर पोल्यूशन होने से प्रिवेंट करना, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और एयर पोल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, सेंट्रल और स्टेट जो बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया गया, सो दैट द एयर पोल्यूशन कुड बी कंट्रोल और दिस एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट कम टू प्रोवाइड द boards with the power to implement the provision of the Act and assign to the board office board function related to pollution. To provide the boards with the power to implement the provision of the Act and assign to the board function related to pollution. So this was the third objective. Silent features क्या क्या हैं Air Act 1981 of India के? The Air Act provides for the establishment of central and state board for the implementation of rule under the Act. ये एयर एक्ट ये करता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट करने होंगे, ओके, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। सेकंड कौन सा, एयर एक्ट एम्स एट प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड abatement of the air pollution. So this air act aims for the prevention of pollution, control of air pollution, and abatement of air pollution, or so that we can stop air pollution. Okay. Now comes to pollution beyond certain limits due to various pollutants discharged through industrial emission is monitored by pollution control board set up in every state. Okay. एक सर्टेन लेवल के से ज्यादा अगर पोल्यूशन हो रहा है, ओके, या फिर पोल्यूशन कोई व्हीकल रिलीज कर रही है या फिर कोई इंडस्ट्री रिलीज कर रही है, तो क्या है, उसको मॉनिटर करने के लिए
हर एक मतलब जगह पे हर एक स्टेट में एक सेंट्रल एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया गया। The Central Pollution Control Board implements legislation to improve the quality of air, prevent and control air pollution in the country. Okay, next comes the board advises the central government on the matter concerning the quality of the air. It also coordinates activities, provides technical assistance and guidance to the state government in addition to setting the standard for the quality of air. It collects and disseminates information in respect to any pollution and perform function prescribed by the Act. The State Board advised the state government on matters concerning the prevention and control of air pollution. Next comes the power and function of the board. क्या पावर और फंक्शन है? जैसे हमारे पास कौन कौन से बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या पेनल्टीज है। So what are the power of central board, central pollution board and state pollution control board? We will see one by one. First we will say the central pollution board. The main function of central pollution board is to जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जितने भी लेजिस्लेटिव रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि हम एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और प्रिवेंट कर सके कंट्री से। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है वो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें कि एनी ऑफ द कंसर्निंग मैटर में एडवाइस करती है। अलॉन्ग विद इट ये जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड को भी असिस्ट करती है और गाइड करती है। ओके, किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत है स्टेट बोर्ड को, तो वो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड करती है। ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड क्या करती है, जितने भी डेटाज हैं या इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पोल्यूशन वो कलेक्ट करती है। ओके, और डेटा के बेसिस में वर्क करती है। नेक्स्ट कम्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या है? The state board have the power to advise the state government on any matter concerning the prevention and control of air pollution। जो स्टेट बोर्ड है उसके पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है किसी पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों के लिए, और क्या कैसे हम पोल्यूशन कंट्रोल करें या प्रिवेंट करें, पोल्यूशन होने से कैसे बचाएं, इन सब के लिए भी क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस करती है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को। Now penalties, we will move to the penalties. The person managing industries are to be penalized if they produce the emission of air pollutants in excess of the standards laid down by the state board. Whoever penalties कौन कौन सी है देखो, whoever provide of the act or any order or direction issued is punishable with improvement for a team which may extend to 3 months or with a fine of 10,000 or with both। Okay, तो पेनल्टीज में 10,000 तक का पेनल्टी आ रहा है, और ये 10,000 का जो पेनल्टी पर मंथ है वो इंक्रीज कर सकता है 5,000 रुपीज पेनल्टी पर डे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एयर एक्ट 1981 of India।
So this was about phase graphs.